गे सोना एक्सपीरियंस मैं आपको ऑस्ट्रेलिया सिडनी का बताता हूँ, जहाँ पे that was an incredibly interesting new experience for me. Namaste on the Paris Currents का video today. You know, because LGBT काफ़ी लोग इतने डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं, they don't know what to do, they don't know where to go, इसलिए काफ़ी लोग उनका फ़ायदा उठा लेते हैं. तो I keep sharing a lot of these videos because आप जब कहीं आपको जाओ, आपको पता है सेफ जगह क्या है. तो पहली बात तो इफ़ यू आर वाचिंग दिस, इसका मतलब ये कि आप इसको देखना चाहते हो. अगर आपको इस चीज़ में रुचि नहीं है, इसके आगे आपको वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है. काफ़ी लोग ऐसे भड़क जाते हो तो इतना गे कंटेंट डालते हो. तो दिस इज़ फॉर लॉट ऑफ द पीपल हु वांट टू वॉच इट. ओके, सो आई वॉज इन सिडनी एंड मैं नॉर्मली जब मैं गे सोनाज गया हूँ, मैं एशियन कंट्रीज़ में गया हूँ. आई गॉन टू लॉट ऑफ गे सोनाज इन कोरिया, थाईलैंड, ऑफ कोर्स आई गॉन टू हांगकॉन्ग, कनाडा. आई हैव गॉन टू सम गे सोनाज. गे सोनाज बेसिकली उसका मतलब ये होता है, आप जाते हो, आप पैसे वैसे देते हो, आप एंटर कर लेते हो, वहाँ पे सारे विजिटर्स हैं. तो आपको लॉकर दी जाती है, देन यूर इन योर टावल और व्हाटएवर, देन यू गो एंड देन यू मीट हुएवर यू वांट ऑन द डंजन, सेक्स रूम, पॉन चल रहा होगा, जकूजीज होंगे, यू कैन बेसिकली पूरा पैराडाइज. यू कैन लॉट मस्ती. नाउ मैं वीडियो बनाता है इसलिए काफ़ी, बिकॉज अ लॉट ऑफ इंडियन पीपल हैव रियलाइज्ड, बिकॉज इंडिया में इट इज़ सच अ टैबू, इट स्टिल इज़. काफ़ी लोग, यू नो, you're not able to express a lot of the way that you want to do stuff. So there's a lot, if straight guys are going out, they'll see girls, they'll say, oh, it's fun. A lot of the gay boys I've seen depression, anxiety इंडिया में इतना ज़्यादा होता है, बस आप खुल के बात नहीं कर पाते. तो मेरी एक्सपीरियंस सुन के आपको एक तो अच्छा लगेगा, दूसरी बात you'll be able to understand आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, and you know where the safety aspect comes in. तो ये वाला जो गेस होना था सिडनी में, आई फॉरगेट द नेम नाउ, बिकॉज मैं क्रूज पे था पिछले 15 दिन से. यहाँ पे नेटवर्क बहुत छोटा था, तो ऐसे लंबे वीडियोस तो इवन दो एट सम प्रीमियम इंटरनेट प्लान आई कुड नॉट अपलोड इट. मैं भी बना देता हूँ. ये वाला जो गेस होना था, दिस वाज बिटवीन अ कबाब सेंटर एंड अ कन्वीनियंस स्टोर. सो इट वाज दैट खुला. मेरा मतलब ये, मेरे को जो सबसे अच्छी चीज़ लगी, इट वाज जस्ट आउट देयर इन द ओपन एंड दैट्स हाउ इट शुड बी. तो अंदर गया, इट वाज लाइक 2 लेवल्स ऊपर. आई हैड टू गो, जो टिकट विंडो था वहाँ पे, द क्यूटेस्ट बॉय एवर, मैं तो उसी से शादी कर लेता. ऑस्ट्रेलियन बॉय, चमकती हुई स्किन, सो क्यूट. ही सॉर्ट ऑफ सेड हाई टू मी, आई सेड हे व्हाट्स अप. तो उसने मेरे को पूछा, ही सेड इज दिस योर फर्स्ट टाइम इन अ गे सौना? आई सेड नो, आई हैव गॉन टू अ लॉट. देन ही सेड इज दिस योर फर्स्ट टाइम इन द गे सौना हियर? आई सेड यस. तो उसने मेरे को पूरा अच्छे से समझाया कि अंदर जाना, तुमको जितने टॉवल यूज़ करना है यूज़ कर लेना, लॉकर में चीज़ें रखना. देन ही सेड, आर यू श्योर यू नो व्हाट्स हैपनिंग? सो आई सेड, आई होप देयर इज अ लॉट ऑफ ऑर्जीज इन देयर. ही सेड यस. तो आई वाज लाइक ग्रेट. मैं अंदर गया, लॉकर वॉकर चीज़ें रखी. मेरे को जो दिस इज द डिफरेंस विच आई सॉ इन द गे सौना हियर, जो मेरे को बहुत अच्छा लगा. Asian gay saunas में something feels a little bit more shady. So people are more like, okay, and they look at you like this. और थोड़ा बहुत, you know, जैसे even India में, no matter how open we are, अगर लेकिन दो लड़के डेट पे हैं, कहीं ना कहीं उनको पता है कि सब उनको देख रहे हैं. It's not as chill. So it is definitely that. But here it was very cool. तो मैं जैसे अंदर गया, there was a lounge जहाँ पे सारे लोग थे. Of course, everyone is only in their towel. But everyone's just chilling, hanging out, they were having their beers and whatever. तो मेरे को बड़ा normal atmosphere लगा. अच्छा, एक टाइम तो मेरे को भी लगा कि हैंग ऑन, यहाँ पे इज इट लाइक जस्ट अ गे मेंस क्लब, और इज देयर रियली सेक्स हैपनिंग हियर? बिकॉज वो इतने नॉर्मल एनवायरनमेंट था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था. एनीवे, उसके आगे गया दूसरे रूम पे, तो वैसे ह्यूज जकूजी. ना मेरा प्रॉब्लम ये था, जितने भी ऑस्ट्रेलियन लड़के थे सब बड़े बड़े लड़के थे. ओके, नाउ so like whoever met me was trying to do stuff to me. They were treating me like a twink, which I'm not used to, and I understand, you know, for a lot of people that might be fun, but for me, I'm like, I don't want to, that's not my scene to get like you know, whatever. तो मैं हो गया थोड़ा कंफ्यूज. ऐसे यार, तो सब बड़े बड़े, मेरे को अपने से छोटे लड़के पसंद है, एंड आई लाइक ऑल दीज लाइक स्वीट बॉयज गाइज. अच्छा, व्हाट वाज इंटरेस्टिंग वाज, ये भी मेरे को बड़ा अच्छा लगा. इंडिया में फॉर एग्जांपल देयर इज अ वेरी, you know, the LGBT movement has become synonymous with, just because you're gay does not mean you want to wear eyeshadow, lipstick, all of that. You could be a gay boy who's heteronormative. Heteronormative का मतलब ये है, आपकी sexuality is gay, but आपकी gender identity में you want to be a boy. इस सोना में मुझे बड़े क्लियरली दिखा, there was a whole bunch of people who were together, who were obviously people who were into a lot of, you know, the stereotypes of colored hair, eyeshadow, ये वो, and then there were a lot of guys who were just like guys who were just in their towel and who were just chilling and who were gay. So I like this section much more, because I'm not attracted to, you know, things on you. I'm attracted to the person. Again, no judgment on either, but मेरे लिए that works. तो मेरे को ये बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे. Anyway, so I've gone in, and then so there was this jacuzzi, and there was this one guy, very good-looking guy actually, but again he was much bigger than me, so I don't know. So he kind of waved to me, he said, "Come chill." So I said, "No, I'm okay." He said, "No, just come on, we'll hang out." So something about him was very friendly in the way he said it. तो वो बैठा हुआ है jacuzzi में, not jacuzzi, it's like a big pool, whirlpool था उसमें. तो अब आई वाज लाइक, चुम्मा चाटी तो कर ही लूंगा. तो मैं उस दूसरे साइड से अंदर पूल में गया, बड़े ग्लैमरसली, आई हैव टेकन ऑफ माय रोब एंड आई हैव गॉटन इन, एंड मैं अंदर जाते बुड़ 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 डूब गया. एंड देन आई केम अप लाइक दैट.
And he started laughing. I said, you knew that was going to happen, right? Because I thought वो shallow होगा. He said, yeah, I kind of saw that happening. तो हमारी दोस्ती हो गई. And I've realized wherever I go, किसी के साथ हंसती है तो दोस्ती हो गई. Experience is much better. थोड़ी मस्ती वस्ती की, chill किया. We spoke and whatever. I can't remember which country he was from, but I don't think he was Australian, or was he? I can't remember, but I think he was European. I can't remember. Anyway, तो वहाँ से मैं जब चिलविल हो गया थोड़ा मेरे भी वार्म अप हो गया था बिकॉज नो मैटर हाउ कूल यू आर एंड ऑल दीज प्लेसेस इट इज़ अ न्यू प्लेस राइट. तो मैं आगे थोड़ा गया शावर में देयर वाज अ साइन बोर्ड व्हिच सेज गो डाउन फॉर द ओजीज. आई वाज लाइक ओह लेट्स गो. मैं नीचे घुसा हूँ ओके एंड द मोमेंट आई हैव गॉन डाउन देयर इज दीस वेरी हॉट फिट toned Asian guys लगे हुए हैं. So the guy is bent over and the other guy is standing behind him. Again, you are watching this video because मैंने आपको पहले warning दे दी थी. आप इसको यहाँ तक इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपको देखने में रुचि है. Alright, so you know you're watching this with your own consent. So when you later say, oh, why are you putting all this on Instagram? You are watching this. Anyway, this very hot Asian guy is at it. I was like, oh, this is totally my vibe. So I chilled there, I hung out with him, उनको देखा वेगा. अच्छा, normally इन चीज़ों में घुस जाके join करते थे, but for some reason I didn't do it because they're really looking like they were into it, okay? And उनके आगे there was a crowd happening and whatever. But I am not used to watching. I'm used to, like being watched. I don't mean that creepily, but I'm saying, I don't care about other people. I want to do my own stuff. तो वहाँ से गया. अच्छा, यहाँ मेरे को थोड़ी यहाँ अंदर जैसे गया ये OG वाला जो जोन था, यहाँ पे sex swings लगी हुई हैं. There are these crazy porn videos playing everywhere. There are these very interesting dark rooms. There are glory holes. Glory hole मतलब आपने एक divider है. So somebody will go and put his penis inside, and whoever somebody else will sort of give them a blowjob from the other side. Again, you're watching this because you wanted to. So they will give you a blowjob from the other side. So I was like, okay, let's try this. So I went and did whatever. Now I have to confess, like unlike the Australian people on the other side, when things are coming out, I may not have been as large, so I didn't get so much attention there. But it was kind of cute. So then I rely on my personality. So वहाँ से बाहर निकला. I met this one guy who grabbed me and he kissed me and he did some random stuff. But I was like, that's not my vibe. Again, वो बड़ा था. He was giving me dominant energy. एक तो nobody believes I'm a dom top, which is so funny. India, तो I think whoever knows me now, whatever people say, saying, come on, you don't top, you only bottom. And when people say stuff, I'm like, great, bro, you think or whatever you want, it makes no difference to my life. तो परसेप्शन वैलिडेशन की मेरे को जरूरत होती नहीं है. इन सिचुएशन में बड़ा सिंपल चीज़ होता है. समबडी विल ट्राई बट व्हेन यू वेरी क्लियरली से लिसन आई एम नॉट बॉटमिंग, फिर उसको समझ में आ जाता है भाई इसको इंटरेस्ट है नहीं. एनीवे सो तो है. एनीवे वहाँ जो मेरे को मजे आए, आई बेसिकली व्हेन आई वेंट इन आई मेट दिस कोलंबियन गाय हु टू बी फेयर वो तो बाद में मेरी बात हुई. वेरी क्यूट लुकिंग गाय, थोड़ा सा छोटा सा हल्का सा टैन था, क्यूट. तो मैं उसको देखा. आई डिडंट डू एनीथिंग. आई जस्ट लिटरली जस्ट वेंट एंड आई पुट माय नेक नेक्स्ट टू हिज नेक. आई सेड यू वेरी क्यूट. So he said, where is that accent from? I said, India. He said, you don't look Indian, which again, everyone keeps telling me, I don't know why. So I have to keep saying, yes, from Mumbai, Mera Bharat Mahan. And then I said, where are you from? He said, Colombia. बस उतनी बात की. मैंने उसकी कान वान से खाने वाले शुरू कर दी. And we got so horny right there. I started humping him. Not humping him. I'm trying not to say the F word, but like whatever. अब we started putting on a show and people started watching. तो पहले तो मज़ा आ रहा. Then I took him to the room and oh my God, it was like going to the best oral spa ever जो मैंने मज़े किए इस लड़के के साथ. And what was cute about him was we were together for about 1.5 hours in that sauna, okay? I would take him to the room, I would take him to the jacuzzi, I would take him to the shower, I would take him to the sex swing. The sex swing was incredibly fun. Oh my God, okay? Now, this sex swing was placed a little bit higher because the Aussie people are a little bit bigger than us. तो इसकी जो सेक्स विंग का जो वास्तु था ना, मेरे लिए हाइट वाइज एक मेरे को फ़ोन का मेरे लिए हाइट वाइज थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी मेरे को. तो उस चक्कर में आई वाज जस्ट लाइक ओ दैट्स पप्पू चाचू कॉलिंग, आई हैड स्पोकन टू हिम. इस चक्कर में मेरे को दिक्कत इसलिए हो रही थी बिकॉज उसका जो हाइट था वो थोड़ा सा अलग था. बट मैंने उसका जो वास्तु थोड़ा सा एडजस्ट किया एंड लड़के को ठीक किया. देन इट वाज काइंड ऑफ फाइन. आई रियली एंजॉयड इट. सो आई रियली एंजॉयड दैट सेक्स विंग एक्सपीरियंस. मैंने काफ़ी टाइम के बाद किया एक्चुअली वो. Then after this, him and I, we went to, then we called some other people into the whatever, so group. Again, this is all, I'm already on prep, you're trying to have safe sex, I always make sure I have safe sex. Those are things you should remember. Behkawe mein mat jao. One stupid night can ruin your entire life. So it's very important for you to remember all of these things, okay? Activism phir bhi chalu hai in the middle of telling you all of these stories. Then the funny thing was, so we did whatever we did for like a long time, okay? And बहुत मस्ती की. And this guy, oh my God, तो हम जब cuddle कर रहे थे उसके बाद, तो he started laughing. I said, what happened? He said, you look like a child, but in bed you're like a horny beast. And again, to be fair, I hear this a lot, okay? In fact, my friend Ryan, जो cruise पे मेरे को मिला था, he was laughing about the same thing. उसको भी लड़कियाँ ऐसी normally बोलती थी. He's, like when he's also with women and whatever. तो I was like, okay. And हंसने लगा. He said, yeah, because you look so innocent, but you're not. I'm like, welcome to my world.
What was cute about this whole experience of the gay sauna in Sydney was how open and chill it was. It was not just hypersexual and horny, it was also easy. I also find for a lot of gay men, for bisexual men, you also want a place where you can just relax. And I think saunas मुझे इसलिए अच्छा लगते हैं because जब आप अंदर जाते हैं आपके पास multiple areas हैं choose करने के लिए आपको horny होना है, chill करना है, you want to get a drink with somebody else because sometimes for a lot of people you just want to hang out there. Now I want to tell you the India perspective. काफ़ी लोग इंडिया में because let's be real, no matter what happens on any kind of video, there will be people who will troll you, who will say stuff, they whatever. हमारे जैसे बहुत कम लोग हैं जिनको इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता because I never read comments, like I really don't. But for a lot of people, that judgment is still off a thing. So for you to be able to, अगर आप ऐसे, I'm trying so hard to do this whole video in Hindi, जिससे more people understand. It is so nice अगर आप ऐसी जगह जाते हैं जहाँ आप जाके chill कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं, without judgment, and you can just be yourself and be free. In Australia in particular, you don't have to worry. कोरिया में थोड़ा सा जो सीन था गे सोना का थोड़ा सा शेडी था तो आई डोंट अ प्लेस which is not open and cool, if it's slightly shady I don't go there so often, but places like that are really nice. So I paid about $35 I think for this, which is 35 Australian dollars. तो आप उसको convert करके देख सकते हो क्या है कितना है. अच्छा ऑस्ट्रेलिया में जो कल्चरली मेरे को नया लगा गे सोनाज एक्चुअली दिन में बड़े एक्टिव हैं तो लॉट ऑफ पीपल गो इन द लंच टाइम बिटवीन 12 o'clock to 2 o'clock and they have some discount also at that time. So a lot of people for lunch which will be maybe like $10-12, and there are nights like naked nights or speedo nights or towel nights or whatever. So that also culturally is different for me because normally I would always go to the sauna in the night, like Bangkok में रात को it is active, but दिन में a lot of people from work will just go and they'll chill and they'll have some good afternoon sex and they'll come back. I hope you do like hearing these experiences and I hope it adds some information. I really hope अगर आप मेरे को बड़ा अच्छा लगता है when I'm traveling, a lot of gay people or people from the community when they meet me at airports and all मेरे को सब खुल के बड़े अच्छे से बताते हैं कि oh I saw your video and I went here and I did this and I did that. मुझे सोना का honestly नाम याद नहीं पर आप सिडनी में गे सोना डालोगे 4-5 ही हैं वो तो आपको मिल जाएगा. But what I really like is when people watch these videos and say यार मेरे को information अच्छी लगी because I didn't know who to ask, because अक्सर क्या होता है लोगों को ये नहीं पता पूछना किससे है. तो at least this information sort of helps you out from that. Go live a good life, go live a free life, be yourself. Please understand, at least in my case मैं हमेशा clearly बोलता हूँ मेरी sexuality does not define my entire life. That is one part of my life. उसके आगे आप काम भी करोगे, चीज़ें भी करोगे, अचीवमेंट भी करोगे, पैसा भी कमाओगे, be a good person, make friends, do all of those things. अपने मेरे हिसाब से मेरे पूरे लाइफ का उद्देश्य और लक्ष्य ये नहीं कि मैं सिर्फ कीप टॉकिंग अबाउट LGBT, तो स्किन केयर भी चलता है, स्पिरिचुअलिटी भी चलती है, सेक्सुअलिटी भी चलता है. एंड आई होप यू डू दैट. एंड आई फाउंड दैट अ लॉट ऑफ gay and bisexual people who have met us successful are people who instead of climbing from a rooftop and saying accept us are saying no, we are also contributing so much to society. I'm also someone who I believe is a nice person, so people will generally love you. So इस speech का कारण ये है because I also find that a lot of people who only become activists, only that I feel like they start repelling more people because they're only fighting constantly. And I think what our community needs is not, you can't get acceptance by fighting. You have to make people understand that your sexuality is a part of you and baki you're like everyone else. So after that big motivational speech, I will go back to my coffee, which is now so cold. And if you have any questions, you can write me in the comment section. I'm in Singapore today. I'm going to go to some gay sauna here. I'm going to have fun. कल तो मैं यहाँ पे आया, कल तो आते ही हालत देख लो. Like, can you see the हालत of this was when I came yesterday. I met this guy. He was so cute. He was some fellow. मेरी दोस्ती होगी. आया पहले तो मैं बड़ा hot horny चीज़ है कि मेरी दोस्ती सबसे हो जाती है. हमने humping की होगी. We must have had sex for about maybe an hour. We cuddled after that for 1.5 hours. We were joking and laughing. हमको इतनी हंसी आ रही थी. We were doing some random stuff. Okay, बहुत मज़ा आ रहा था. तो I will see him again. वो होटल पे रह रहा है वो भी. तो बड़ा अच्छा लड़का था. Very cute guy. Very cute guy. And again, it was a cuddle monkey. You know, a lot of people say तुम जहाँ भी जाते हो तुमको ऐसे लोग कैसे मिल जाते हैं. This I think I will take some credit for. It's also the fact that my energy is also not जब कोई रूम में आता है भाई तुम निकल लो होने के बाद. You want to chill and you want to have fun. I also only meet people who I already think on photos are attractive to me. तो जब मुझे कोई इंसान मिलता है I already like how they look. I already like how they're speaking. So that's important to me. Anyway, I will now go because I want to go to the gym. I want to go to the pool. I hope you've got lots of information. I hope you've got some motivation. I hope you're happy about who you are. I hope you become comfortable in your skin. And I hope you can understand that you have to just live your best life. Okay? Enough motivation. Big puchi.